Morning, students. Yesterday we did pronouns. I hope everybody remembers. Okay, we did personal and possessive pronoun. Today we will discuss. We will do the last topic, that is reflexive pronoun, through a video. So now let's revise it once. Personal pronoun and possessive pronoun. Then we will do the reflexive pronoun. So what are pronouns? I hope everybody remember that pronouns are the word that replaces a noun. When we don't want to repeat the noun again and again because it will look weird, no? It will look weird if we will repeat the noun again and again. थोड़ा अलग लगता है, अच्छा नहीं लगता, राइट? सो हम क्या करते हैं, हम करते हैं pronoun से replace noun को, ठीक है? यानी एक बॉय का नेम है तो हम उसकी जगह ही यूज़ कर देते हैं, एक गर्ल का नेम है इसकी जगह हम शी यूज़ कर सकते हैं रिपीटेडली यूज़ करने की बजाय उसको, ठीक है? We can use she and he there. So that is pronoun. Now pronouns are of different types. Pronouns different types के होते हैं, ठीक है? But the main one that you use basically everywhere you use, that is personal pronoun. Personal pronoun, what is a personal pronoun? The pronouns which are used in place of the names of persons, animals and things are called personal pronouns. वेरी सिंपल, प्रॉपर नाउन्स की जगह पे जो यूज़ होगा, यानी कि जो भी नाउन आपका किसी का भी नाम है, ठीक है, तो नेम की जगह पे या वेदर इज द नेम ऑफ एन एनिमल और पर्सन और थिंग, किसी का भी, चेयर, टेबल, राम, सीता, दिल्ली, एलिफेंट, ठीक है, तो इनकी जगह जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, दोज प्रोनाउंस वर्ड्स आर कॉल्ड, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ बुक, इट इज़ लाइंग ऑन द टेबल. सो मैंने एक बुक खरीदी जो क्या है, टेबल पे रखी हुई है. ओके, है इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ बुक. बुक की जगह हमने क्या यूज़ किया है, इट. सो इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, तो इसलिए इट क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है. ओके, सो यू कैन सी पर्सनल प्रोनाउंस आर of three types. Pronouns are of three types, three different types. Besides this personal pronouns and all, that is first person, second person, and third person. We can divide it in this way. First person means the speaker. Second person, to whom you are speaking, and the third person, to about you are speaking. A person whom you are speaking about. मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट पर्सन जिस जो बोल रहा है, यानी आई, मी, यानी मैं, हम फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं, ठीक है. वी, हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर द फर्स्ट पर्सन, हम जिससे सामने वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है. फ्रंट पर्सन, द फ्रंट पर्सन, यू, दैट इज़ द सेकेंड पर्सन कॉल्ड, ठीक है. यू, जो हमारे सामने वाला इंसान है, द फ्रंट ह्यूमन बीइंग वी आर टॉकिंग टू, या एनिमल और वट एवर, सो उसको हम सेकेंड पर्सन बोलेंगे, यू आता है, ठीक है. देन थर्ड पर्सन मीन्स जिससे जब हम दो पर्सन बात कर रहे हैं, व्हेन वी टू पर्सन्स आर स्पीकिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, मीन्स द अदर पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट देयर. ओके, देन वी कैन यूज the third person. We can use the third person, he, she, it. It is used for the animals, neuter gender, that means where we don't know whether it's masculine or feminine, then we can use third person, it. Okay, and he and she, he is used in place of the name of a boy and she is used in place of the name of a girl. Now these are subjective and objective also. I have already told the subject means the doer of the sentence, यानी काम को करने वाला sentence में, ठीक है. So doer of the sentence, as doer if we will use the pronoun word, then it is called as the subjective pronoun. And objective means as object, if we are using object means the effect of the work falls on, means object, the word on which the effect of work falls, यानी काम का जिस पे असर पड़ता है, यानी किसका, किसको, इसका आंसर देता है, हुज, होम का आंसर जिससे मिलता है, जिस वर्ड से, दैट इज ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, our common example, that is Ram is going to Delhi. Okay, so Ram is the subject here because Ram is going, क्योंकि काम को करने वाला कौन है, करता कौन है, राम, he is the subject here. And वेयर ही इज़ गोइंग, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ठीक है. तो इसका आंसर कहाँ से मिला हमें, दिल्ली से, तो दैट इज़
object. For example, one more example, let's take she is playing with a doll. So she is the subject here and playing with the doll. Doll is the object here. Okay. So subjective pronoun used in place of the subject and objective pronoun used in place of the object. Okay. For example, हम ऐसे तो सेंटेंस नहीं बोलेंगे राम इज गोइंग टू दिल्ली, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे हिम इज गोइंग टू दिल्ली, नो, वी विल से ही इज गोइंग टू दिल्ली. ठीक है. Yeah, she was playing with a doll. So we can't, Sita was playing with a doll. We can't say Sita was playing with her. Doll को नहीं बोलेंगे. हम बोल sorry, we can't say that Sita was playing with she. ठीक है, हम बोलेंगे with the doll. The doll is a thing, so we will say it. Sita was playing with it. Okay. So that means as subject we will use these words and as objects we will use these words. I as subject, then as object I का change हो जाता है me, you. He will be changed as him, she will be changed as her, it same, we, us, you, and they, them. These are all plural words, these are all singular nouns, these are all plural nouns. Okay. Now, here are some examples. You can read it out afterwards on your own. I like coffee. John helped me. See, I is the subject here and me is the object here. Okay. Do you like coffee? John loves you. So, you is the subject here and here you is the object. He runs fast. Did Ram beat him? So, he is the subject here and him is the object here. Okay. And these are more. So I hope it is clear. Okay, we often use it to talk about the weather, temperature, time, and distance. Simply, it's raining. It will probably be hot tomorrow. It is it 9 o'clock yet? It's 50 kilometers from here to Cambridge. So when we are talking about the weather, the temperature, the time and the distance, जब हम इनकी बात कर रहे हैं मौसम की, तापमान की, टाइम वक्त की, समय की और डिस्टेंस की, ठीक है, और दूरी की, तो इनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम इट वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. So the personal pronoun is clear, I hope. See, here Priya is saying I'm going to the park, will you come? Then Vikas is saying let us wait for Richa. तो रिचा के लिए वेट करते हैं. Priya said when will she come? Vikas said she will come at 6 o'clock. Now here the speaker is first person Priya. So she used I word. You. Second person Vikas. So she used you. Let us combined one. That is also called used in first person but objective. Then when will she come? वो कब आएगी? ठीक है. She will come at 6 o'clock. किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है. दैट मीन्स रिचा. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन शी यूज़ किया है. ठीक है. तो फर्स्ट इज द पर्सन स्पीकिंग, यू इज द स्पोकन टू and she is the spoken about. First person, second person and third person. Okay. And it can be singular and plural both. I have already told. They is the plural one, he is the singular one. So I hope it is clear. Now let's come to possessive pronoun.